Good morning, everyone. I'm audible. Okay. Last classes, I showed you some videos on high-rise buildings, um, steel structure. How I think I have showed you that also the warehouse one. How to just practical on the practical field on the side how it is made your constructed your this warehouse steel frame structures, how it is joined together. All those videos I think I have shown you. So today I'll show you another video on this one, the tubular structures. Now, how tubular structure, why, what are tubular structures, why we, I'll show you a video where you will have the all the things related to important things related to your tubular structures is clearly explained there. So, I'll play the video, listen properly, and after that I'll show you another a simple video on why tubular structures, why we need to study tubular structures. Okay, so let me start the video. I'll share my screen and show you the video. At the end I'll take your attendance. Okay, so tubular structures, because see the last things which we are doing now for the theory part was your um, industrial buildings. So for industrial buildings I showed you a video where everything was mentioned to you. Okay, theoretically it was mentioned to you, so note down those. Okay, I'll again share later, if you want I'll again share those links together, those video things together in your WhatsApp group. Okay, that one tubular structure, sorry, the industrial buildings one we have done. Then high rise buildings we have done. Now will be doing the tubular structures. Okay, the theory portions will be here on the tubular structures. We don't need to know much about this, just small things we need to know. Okay, some parts. So let me share now my screen. Okay, tubular structure. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टीटो स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये आपके रिपोर्ट में लिखना है और आपको एग्जाम्पल है टीटो स्ट्रक्चर का। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आर्क शेप है। सिमिलरली का कंप्रेशन में अंदर यूज हो रहा है, वो भी एक ट्यूब है और ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक ट्यूब है, स्ट्रक्चर भी है। तो अब हम आगे इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर ट्यूब के शेप में हो और ट्यूब से बना हो उसे हम ट्यूबलेस स्ट्रक्चर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एग्जांपल्स, दोनों ही बीच के एग्जांपल्स हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका ट्यूब स्ट्रक्चर है। सिमिलरली ये ट्यूब स्ट्रक्चर शो हो रहा है। यहाँ पे बेसिंग का काम भी कर रहा है और यहाँ पे भी बेसिंग का काम कर रहा है और ओवरऑल स्टेबिलिटी दे रहा है दोनों ही ब्रिजेस को। तो इसलिए हम ट्यूब स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं आजकल। दूसरी बात, ये एस्थेटिकली अपीयरेंस में हमें अच्छे भी लगते हैं। आप देख सकते हो कि एस्थेटिकली इट इज मच मोर गुड लुकिंग देन द ट्रेडिशनल ब्रिजेस। व्हाई इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट? अब इसे नया कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो
रोल्स इन सेक्शन के बारे में, जैसे यार्ड सेक्शन, हेड सेक्शन, आप स्ट्रक्चर मेंबर भी पढ़ा है या भी पढ़ा होगा। बट ट्यूबलेस स्ट्रक्चर ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब ये नया कॉन्सेप्ट डेवलप टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। पुराने टाइम में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट को बनने में टाइम लगा। वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। जो पहला फैक्टर था वो था स्मूथ कट सरफेस। अगर कोई भी ट्यूब है, जो स्ट्रक्चर है, अगर हमें उसे कट करना होता बीच में से या कहीं से भी, तो हम उसको स्मूथली कट नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा था प्रोफाइल एट द एंड ऑफ ट्यूब, मतलब जो ट्यूब का एंड साइड है वहां से हम प्रोफाइल नहीं दे पाते थे। हमें बेवल चाहिए, हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, ये हम कट नहीं कर पाते थे। और थर्ड था कनेक्शन, क्योंकि हम प्रोफाइल नहीं दे पाते थे एंड कनेक्शन के लिए, तो हम कनेक्शन भी नहीं दे पाते थे अच्छे से, क्योंकि उस टाइम तक टेक्निक्स नहीं आई। अब जो पहले दो फैक्टर्स हैं, स्मूथ कट सरफेस एंड प्रोफाइल एट द एंड ऑफ ट्यूब, ये दो हुए ऑक्सीएटरी कटिंग मशीन से, जो भी डेवलप हो गई है अब। और उसी तरह कनेक्शंस हैं, वो अब वेल्डिंग कनेक्शंस से हम उसको जोड़ते हैं। आपने रिवेटिंग बोल्टिंग भी पढ़ा होगा, बट रिवेटिंग बोल्टिंग में क्या होगा कि आपको अलग से वो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर पे दिखेगा, बट वेल्डिंग में वो मर्ज जाता है और वो देखने में भी अच्छा लगता है, और इसीलिए ट्यूबलेस स्ट्रक्चर अब ज्यादा यूज होते हैं। इम्पोर्टेंस एंड यूज। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो उसकी इकोनॉमी है वो अनकंपेरेबल है। अनकंपेरेबल क्यों है? क्योंकि जो काम हम ट्रेडिशनल रोल सेक्शन से कर सकते थे, वही काम हम 40 to 50% कम में ट्यूबलेस सेक्शन में काम कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है वो अनमैचेबल है। सेकंड पॉइंट वही है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका जो सेल्फ रेट होता है वो घट जाता है या फिर स्मूथ होता है। ऑडिट होने की वजह से हमारा डेड लोड कम हो जाएगा, और डेड लोड कम हुआ बट सेक्शन वही रहा, तो हमारी स्ट्रेंथ भी उतनी ही रहेगी। इट मीन्स कि आपका डेड लोड कम होता जा रहा है बट स्ट्रेंथ की कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो उतना ही बियर कर सकता है जितना कि एक नॉर्मल हाई सेक्शन या हेड सेक्शन कॉलम। बट उसकी वजह से हर में डेड वेट ज्यादा था, यहाँ पे डेड वेट कम होगा। और इसके यूजेस देखते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे कि रूफिंग सिस्टम में, इंडस्ट्री बिल्डिंग में आप रूफिंग सिस्टम का देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दूसरा है वेयर हाउस। यहाँ वेयर हाउसेज में आप मोस्टली देखेंगे आप ट्यूबलेस स्ट्रक्चर ही यूज होते हैं, ताकि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड किया जा सके। इसी तरह लार्ज स्टेडियम में, जैसे स्टेडियम की छतें होती हैं, उनको भी ट्यूबलेस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं, ये आपका ट्यूबलेस स्ट्रक्चर ही है, तो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में भी यूज होते हैं। उसके बाद ऑफशोर ड्रिलिंग इंस्टॉलेशन, जहाँ से हम तेल निकालते हैं समुद्र में से, तो उसके लिए जो साइट बनानी होती है वहाँ पे भी हम इस ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर वेट। तो हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। अब दो इंडियन स्टैंडर्ड कोड नाम होता है, IS 1161 एंड IS 806। आइए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थिकनेस, तीन क्लासिफिकेशन होती है, लाइट, मीडियम एंड हेवी, एज पर द थिकनेस ऑफ द ट्यूबलेस सेक्शन। एंड सिमिलरली बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस, तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, ये होती हैं स्टील 35 या YST 22, स्टील 40 YST 25 एंड स्टील 55 YST 32। इसमें हमारे ग्रेड होते थे स्टील के FE 415, FE 500, FE 250 या माइल्ड स्टील जिसे बोलते थे। उसी तरह ट्यूबलेस स्ट्रक्चर के भी स्ट्रेस के हिसाब से YST 22, YST 25 या YST 32 से हम कह सकते हैं।
या फिर स्टील 35 स्टील 40 ये आपको IS 306 में और IS 116 में इसकी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। और जो हम डिजाइन करेंगे वो भी हम इन दो कोर्स के बेसिस पे ही करेंगे। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है इसका स्मॉल सर्किट, जितना आपको बता चुका हूँ। सर्किट स्मॉल है तो डेड लोड भी कम हो जाता है। सेकेंड, डायरेक्ट कनेक्शन रिड्यूस डेड लोड। अब जो कनेक्शंस करने होते हैं वो हम वेल्डिंग से करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो लोड आता है रिवेट्स या बोल्ट्स का वो रिमूव हो जाता है स्ट्रक्चर से। अब ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है वो होलो भी हो सकता है और जिसका सरफेस एरिया है वो स्मॉल हो जाता है, और उसकी वजह से जो पेंटिंग का काम है या मेंटेनेंस का काम है वो भी कम हो जाता है, जिस वजह से वो इकोनॉमिकल बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर डायनेमिक लोड। जब हम डायनेमिक लोड्स के बारे में बात करते हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की उतना अच्छा स्टेबिलिटी हमें मिलती है, और ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मिल जाती है। उसके बाद स्मूथ सरफेस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रूजिंग। अब बात करते हैं जब हम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में, तो वहां पे आपका मॉइस्चर या डस्ट इकट्ठा नहीं हो पाता, और इस वजह से कोरोजन की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म डायमेंशन एंड वेरिएबल थिकनेस एज पर द लोड एंड फ्लोर रिक्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं तो वहां पर लोड की वैल्यू भी प्रेफर होती है एज पर द फ्लोर। बट ट्यूबलेस सेक्शन में क्या होगा कि आपका यूनिफॉर्म डायमेंशन रहेगा, आप उसकी थिकनेस को घटा या बढ़ा सकते हैं एज पर द लोड रिक्वायरमेंट एज पर द फ्लोर कंडीशन। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ताकि यूनिफॉर्मिटी है कॉलम्स वो बनी रहे और स्ट्रक्चर देखने में अच्छा लगे। उसी तरह हम जो उसके अंदर होलो स्पेस होती है, जो ट्यूब होती है, ट्यूब में आप देखोगे जो स्पेस होता है बीच का वो खाली होता है, और उस स्पेस को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रेनेज के लिए या वायरिंग के लिए। और दूसरा तरीका है हम उसके अंदर कंक्रीट फिल करते हैं, ताकि वो एज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर एक्ट करे और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाए। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको बनाने की जो खर्चा है वो काफी ज्यादा है। अब बात करेंगे हम एज ए कंप्रेशन मेंबर ही यूज होते हैं ट्यूबलेस स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेडियस ऑफ गायरेशन। जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है ट्यूबलेस स्ट्रक्चर का वो यूनिफॉर्म ही होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये एक कॉलम है, ट्यूब है, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो यूनिफॉर्म है, इस वजह से जो स्टेबिलिटी मिलती है एज ए कंप्रेशन मेंबर वो अनपैरेलल है। जब हम डिजाइन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है that diameter of the tube should be as large as possible with D/T ratio as small as possible to avoid local buckling। हमें डायमीटर को जितना लार्ज हम कर सकते हैं एज पर स्पेसिफिकेशन हम वो करें, और जो D/T रेशियो है उसको स्मॉल रखें, ताकि जो लोकल बकलिंग होगी कॉलम में वो अवॉइड हो सके। Now code or terms which will be used in the numerical or designing part। तो पहला है कोड जो हम ले रहे हैं IS 1161/2014। सेकेंड इज IS 806/1968। उसके बाद हम टर्म्स जो यूज करेंगे दैट इज इफेक्टिव लेंथ, ये आपने पढ़ा भी होगा बेस्ड ऑन एंड कंडीशन। तो कॉलम्स की लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, वो एंड कंडीशन पे होती है, जैसे रेंज होते हैं होते हैं तो कुछ वैल्यू होती है इफेक्टिव लेंथ की, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सिलेंडर मैश रेशियो हम यूज करेंगे L/R, और रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करेंगे स्मॉल r। परमिसिबल एक्चुअल स्ट्रेस इन कंप्रेशन सिग्मा c, जिसकी वैल्यू हम IS 806 और IS 1161 से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिनियर इंटरपोलेशन यूज करेंगे और फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा c। और लास्ट में जो हमारा लोड कैपेबिलिटी है या एक्चुअल लोड है जो हम कैरी कर सकता है कंप्रेशन मेंबर ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में, उसका हम फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं दैट इज एरिया इनटू सिग्मा c, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। तो बेसिकली ये 4-5 चीजें हैं जो कि आप डिजाइनिंग में यूज होंगी ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में। अब हम नेक्स्ट
वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन्हीं टर्म्स को यूज करके। Okay, so this was your tubular structures. I hope now you know what is tubular structure, why it is used, where it is used, what are the advantages, disadvantages. Okay, now one more thing. One short, small example I'll show you now on why the tubular structure is more resistant to the heavy loads than any different shapes of structure, or you can say the different shaped members like the roll steel sections I, T, etc. Wait, let me show. I'll share my screen again. Okay, just a small example why the shape matters. Okay, this one. Okay. So we're going to be learning about structural engineering. And when we talk about structural engineering, we need to be engineers, okay? And we're going to think about how to build things, because that's what engineers do. So one of the first things we're going to be learning about today is how to make a really strong structure. So I have a whole crate that's filled with pieces of wood. And I'm going to want to balance these woods and figure out how I can hold them up. So let's start with this piece of paper. It's just a piece of paper. I'm going to fold it in half and I'm going to put it on the floor. And then I'm going to take this piece of wood and I'm going to balance it on top. So let's see. It doesn't hold. So something in that structure did not work. So I'm going to say, let's do another one. I'm going to take that same piece of paper, but this time I am going to roll it up. I'm going to make sure it's nice and even, and then I'm going to take pieces of tape and I'm just going to tape it together so that it stays in this shape. And I'm going to put it down so it stands nice and even. Now I'm going to take that piece of wood and I'm going to put it back on top. Let's see, do you think it's going to hold? Let's try. Let me see. It held it up. Why did it hold this time? Now I want one of our friends, your teacher can pick somebody, and I want them to come hold one of these pieces of wood. And tell the class, is that a pretty heavy piece of wood? So go ahead, let's find somebody. It's pretty heavy, isn't it? So, I'm going to take another piece. What do you think, my friends? Wow, so that piece held too. What if I take a third? What do you think? Is it going to stay? Oh, let me see. Wow,
3 pieces of wood are on that piece of paper. So what if I do a 4th piece of wood? Let's see what happens. One, two, three, 4 pieces of wood. I think my basket has lots of pieces of wood. How many is this tube going to be able to hold? Let's see. Let's try another piece. Let's see, is it going to hold? Another piece of wood. This is crazy. Can I hold another one? Another piece of wood. What about another one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't think this is going to work. What do you think? Should we try? All right, let's go. 8 pieces of wood. That's crazy. How can that little piece of paper hold that many pieces of wood? Wow, I don't know. I want you to think about it. Do you think it's the tape? I'll tell you, it's not the tape. The tape didn't do anything. I'm going to put my shoe on top too. It's not the tape. You're going to make a tube just like this. You're going to bring it to your teacher and she's going to tape it up. You're going to try and balance some things on it too. You cannot balance my pieces of wood. I don't want you getting splinters. You also cannot balance my table toppers that have the table numbers on it. But you can balance your journal on it. And then maybe you'll balance some rulers on it. See what you can do. And you're going to bring, if you're careful with that tube, you can bring that tube home and you're going to get to amaze your moms and dads. Look, if this is still balancing, how long is it going to stay there? So you're going to amaze your moms and dads. You can put books on it at home and see what happens. See how many books you can balance. Maybe there are some other things you could try at home too and see what happens. So why does this work when this one did not? I will bet it has to do with the shape at the bottom. So go have fun and try and see what you can balance on your tube. But once this movie's over, what I want someone to do is your teacher's going to pick one. So understood, the shape plays a very important role in your structures too. When you have a slender structure, tubular structures with same uniform radius of gyration, then it has more strength to carry a huge amount of loads on it, okay, rather than different structures. Therefore, tubular structures, this is a simple short example of how the shape plays a very important role in uh, giving strength or resisting to loads, okay. This was your another short sweet example of your tubular structures, okay. So understood now why tubular structures are used, where tubular structures are used, okay, advantages, disadvantages, these things. So because we don't need to go in so detail, so we'll not be doing the designing on that, because if we design then we have to design all the things. So only the this is the last chapter now, so we will be only doing the theory portions here, the basics, okay. In short, we'll be discussing these things. Like today, we have done the tubular structure. Then maybe the curved beams. Next class, we'll be looking and we'll go through the curved beams, why they are used, where they are used, etc. It's this same some basics. Okay, this simple some basics short. In short, we'll learn. Then we will be discussing means I'll give you at the end, I'll give you some MCQs on these topics, like the tubular structures. Then we have the industrial building, okay.
beams. Okay, because ultimately the MCQ or the MCQs have to be discussed because you will have those only in your finals. Okay, so I'll take the attendance now. Okay, this is section A. It's okay for today, and we have a lot of time, so we'll be doing revisions only after we are done with these theories, short theories. Okay, this was your DOS. Today is 18, 12. Okay, please give your attendance. Roll number 1, Present, ma'am. 3, 4. Sorry, 4. Present, ma'am. Okay, 4. Yeah. 5, Present, ma'am. 6. Charlie. Charlie also something. Okay, 7. 7 is Aksan R. Marak. Maren Long. Charmilalu. Chirikam G. Moming. Ahoka. Pusho Kampo. Tovika. Present, ma'am. Tovika. Jamsu Sanin Zamir. Subolemba Ayer. Present, ma'am. Oh, Wabong Temzen Zamir. Moakum Imchem. Imkong Nungsung Kichu. Oisil N. Marak. R. Kikon. Shubhakalita. 25. Ikram Hussain. 26. Mangam Wangsu. Present, ma'am. Mangam Wangsu. Bomnak Gampak. Gapak. Bomnak. Then we have Ganom. Hirokjyoti. Ige. 34. Masuma. Jumram Kambu. Bangloy. M. Samarjit Sinha. S. Saknei Champang. Solomon Taki. Pallab Present, ma'am. Solomon Taki present. Pallab Talukdar. Pallab Talukdar. Okay, 48. Vivek Pradhan. Vivek Pradhan. Kirit Debarma. Kirit Debarma present. 36. Masuma present. 12. Usho present. Okay. 50. Saptadeep. Saptadeep. Nitoka Shoe. Dani Paeng. Mebangsan Ai Pale. Abdul Latif. Tomobam. Yes, ma'am. Present. Tomobam. Present, ma'am. 60. Muhammad Mustaqim. 61 present, ma'am. Present. 60 present, ma'am. Yeah, present. Ma'am, 61 present. Present. Vicky, 061. Vicky present. Muhammad Mustaqim. Present, ma'am. Present. Present, ma'am. 061. Jagjem Hello. Sowal. Long Kumar. Nanzia. Yes, ma'am. 99. Okay. 101. Tessil G. Ma'am. 145 present, 045. 101.
Okay, 104, Nai Nacho, Gumgen, 106, Ankur Jyoti, 108 present, ma'am. Ankur. okay, 109, Kelsang, Present, ma'am. Kelsang, present, ma'am. okay, Bitumor, Bitupon, Present, ma'am. Mitapon. Davyang Yang, 113, Present, ma'am. Byangla 113. Okay, Vanessa, Present, ma'am. 114. Pallavi, Present. Panna, Present, ma'am. Panna. Shimti, Present, ma'am. Shimti. Mol, Yes, ma'am. Navajyoti, Present, ma'am. Chimasa, Juice, 143, Yes, ma'am. Juice, One Takamaka, 144, 145, Yes, ma'am. 149, Genevieve G. Momin, 149, 151, Chiranjeev, okay, Chiranjeev present, 045. 045, Pallab Talukdar, always your voice is so low, Ma'am 057. 57, Abdul Latif given, 49, okay, 45, I'll tell you who are absent, okay? If you're present, you can write in the chat box also if you want. Absentees are 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 48, 50, 51, 52, 54, 42 present, ma'am. 50, No, 42 present, ma'am. 42. Okay. For 54 absent, for 104 absent, 106 absent, 118 absent, 136 absent, 144 absent, 151 absent. Okay. Okay then. For today it's over. Thank you.